अच्छा जी, एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था। स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. If we discuss about rate of change of distance, that is called speed. If we talk about rate of change of displacement, that is called velocity. ठीक है. The same thing is here, but it is rate of change of speed or rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज इट एक्चुअली. व्हेन डज अ बॉडी पोजेस वेलोसिटी. एक बॉडी में वेलोसिटी कब होती है? हम्म. हाँ जी बेटे. वेलोसिटी, व्हेन डज अ बॉडी पोजेस वेलोसिटी? हाँ जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवलिंग थ्रू डिस्प्लेसमेंट, दैट बॉडी इज हैविंग or that body is possessing velocity at that time. ठीक है. If we talk about velocity and its rate of change, then this body is having acceleration. Acceleration, rate of change of velocity is called acceleration. अच्छा, let's suppose a body has started moving. ठीक है, एक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया. It is possessing a velocity because it is traveling through displacement. एक straight line, straight path में वो जा रही है, shortest path में. Velocity से move करना start किया. Let's suppose in the beginning, in the start, its velocity, start में, its velocity was 5 meter per second. After some time, let's say after 10 minutes, in the beginning it is 5 meter per second. After 10 minutes, its velocity has changed. Velocity has changed. We say that, let's suppose it is now 10 meter per second. The initial velocity was, or the velocity that was in the beginning, it was 5 meter per second. After 10 minutes, its final velocity has become 10 meter per second. So what is change? What is change here in the velocities? अगर स्टार्ट में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, आफ्टर 10 मिनट्स या 10 मिनट्स कह लें, द वेलोसिटी इज नाउ 10 मीटर्स पर सेकेंड. दोनों वेलोसिटीज में कितना चेंज आया है? जी बेटा, दोनों वेलोसिटीज में कितना चेंज आया? आवाज आ रही है? कितना चेंज है दोनों वेलोसिटीज में? मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर में 10 मिनट्स के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो गई. ये कितना चेंज आया है? कितना? 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब आप उस 5 मीटर पर सेकेंड को उस टाइम से डिवाइड कर दें, सो दिस थिंग विल बी एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज के दो वेलोसिटीज हैं, एक स्टार्ट में थी और एक अब फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है. दोनों में चेंज जितना आया है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें, टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम इट्स रेट. It will become its rate. So this thing is called acceleration. Rate of change. Velocity कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v और i. I represent initial. Initial velocity, let's suppose it was 5 meter per second.
ठीक है, and its final velocity, थोड़ी देर बाद जो velocity हो गई, that is changed now. Let's suppose it is represented by VF. Final velocity is equals to, let's suppose 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है, स्पीड बढ़ गई है आपकी velocity. अब we have to define acceleration. Acceleration, we are saying that change in velocity, rate of change of velocity, rate of change. change का मतलब है दोनों में कितना डिफरेंस है. rate of change of velocity, rate का मतलब है, rate means you have to divide it by time, change means you have to subtract both. Okay, so acceleration is represented by, acceleration is a vector quantity, ठीक है, because इसमें velocity की बात हो रही है, velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity. Acceleration is represented by this bold A, or A with a bar upon it, or A with an arrow upon it, ठीक है. So here we can say that acceleration is equals to rate of change of, rate of change means change in velocity divided by time. टाइम टेकन लिखें या टाइम लिखें. चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, दोनों को माइनस करके ही हमें पता चलेगा. माइनस हम कैसे करेंगे, यू विल से दैट फाइनल वेलोसिटी, जाहिर है वो बिगर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी divided by time. So here we can say that acceleration, rather you write it bold notation, rather you write it with a bar upon it, rather you write with an arrow head upon it. Acceleration is equals to final velocity minus initial velocity divided by time. Here this A is representing acceleration, VI stands for initial velocity, VF stands for final velocity, T stands for time. So here SI unit of acceleration is, SI unit of acceleration is meter per second square. For velocity it was meter per second, and for acceleration it is meter per second square. Now let's suppose we solve this thing for these two values. Now acceleration will be, if you put values in this formula, final velocity is 15 minus initial velocity was 5 divided by time. Time हमने mention ही नहीं किया, चलें time, let's say it is 10 seconds. ठीक है, let's say time is 10 seconds, it is 10. 15 minus 5 is also 10. 10 over 10, we have to find out acceleration, or you will say 10 will be cancelled out by 10. What is left? 1 meter per second square is the acceleration for these two values. Are you clear about acceleration? Acceleration is actually rate of change of velocity. Rate means you have to divide it by time, and change means you have to subtract. The velocity VF is 15 meter per second. Acceleration is defined as rate of change of velocity. It is not for speed, it is just for velocity. Beta 10 divided by 10, cancellation property use होगी. It will be 1 here, 1, 10, 1. 10 divided by 10, जब आप 10 को 10 से divide करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा ना. Acceleration is rate of change of velocity. Rate means you have to divide it by time. Change means you have to subtract. Acceleration is a vector quantity. We can denote it by bold A, or A with a bar upon it, or A with an arrowhead upon it. ठीक है? So acceleration A is equals to change in velocity over time. Time is denoted by small t. Change in velocity means we have to subtract both of the velocities. Rather you subtract final velocity from initial, or initial from final.
It is according to the values. So you will say final velocity minus initial velocity divided by time. SI unit for acceleration is meter per second square. Here put the values in the formula. VF final velocity was 15 minus initial velocity was 5 divided by time was 10 seconds. Your time should be in seconds. If it is not in seconds, you have to convert it. Let's suppose time is given in minutes, so you have to convert it in seconds by multiplying by 60. Subtract it or you can get this. Is it clear? Okay. Now acceleration is of two types, positive acceleration or negative acceleration. Positive acceleration is simply when final velocity is more than initial velocity. Keep remember these 2 points in your mind. Acceleration is of two types. Positive acceleration, simply called acceleration, or negative acceleration. Negative acceleration is called retardation or deceleration. Positive acceleration is simply called acceleration, whereas negative acceleration is called deceleration or retardation. Negative acceleration is when your initial velocity is more than your final velocity. If I say a body is moving with 5 meter per second, after some time its velocity has increased. Velocity has increased, yani कि final velocity is more than initial velocity, then that acceleration is called positive acceleration. Now let's suppose a body is moving with 50 meter per second with initial velocity. After some time, its velocity has decreased. Its velocity has decreased. Let's suppose now it has become 40 meter per second. Now in this case, you will say that acceleration is negative. Negative means it will be having a sign of minus with it. Then this negative acceleration is called retardation or deceleration. Retardation or deceleration. Is it okay? Okay. Now come towards uniform acceleration. This uniform acceleration नहीं है, मतलब जितनी start में थी ना uniform acceleration, if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. यानी कि आपने 5 मिनट्स के बाद एक्सेलरेशन निकाला, आपका लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। आपने अगेन 5 मिनट्स के बाद दोबारा यानी कि फर्दर 5 मिनट्स गुजरने के बाद इफ यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, जी बेटा एक्सेलरेशन, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपने सिर्फ इसकी बस ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है ना। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. बेशक इंटरवल शॉर्ट है या बड़ा है, आप 100 सेकेंड्स के बाद भी निकाल के देख लें, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा। आप अगर 5 सेकेंड्स के बाद निकाल के देखते हैं, एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा। दिस थिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आए नेक्स्ट पेज पे, बुक पेज नंबर 37 पे नहीं सॉरी 39 पे है। ये एक्सप्लेनेशन है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन की और नेगेटिव एक्सेलरेशन। नहीं आना चाहिए। Acceleration of a body is negative if velocity of the body decreases. अगर velocity decrease हो रही है with the passage of time, then the acceleration is negative. The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving.
एक ये चीज भी होती है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. Your velocity is increasing with the passage of time. If velocity is increasing, then it's mean their directions are same. Direction same है, then the acceleration is positive. If velocity is decreasing with the passage of time, अगर velocity जो है वो decrease हो रही है with the passage of time, then it's mean acceleration and velocity both are in opposite direction. Opposite direction का मतलब ये है कि velocity कम होती जा रही है, velocity कम होती जा रही है, direction is changed. This negative acceleration is also called deceleration or जी बेटा, डायरेक्शन चेंज का मतलब ये होता है कि जब हम उनको माइनस करते हैं ना तो माइनस का साइन आ जाता है. लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 5. आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 में से विद द साइन ऑफ माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा ना उसमें. ऐसा ही है ना, आप 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 माइनस 8, इट विल बी -3 बिकॉज 8 इज अ बिगर नंबर. माइनस आ जाएगा. दिस माइनस इज रिप्रेजेंटिंग, इस माइनस से पता चलेगा कि इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड नाउ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. If it is positive, then it means acceleration and velocity both are in same direction. Is it clear? अच्छा ठीक है. एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें फिर हम नेक्स्ट काम कल करेंगे. A car starts from rest. रेस्ट का क्या मतलब है? एक गाड़ी खड़ी है, उसकी क्या वेलोसिटी होगी? 0. स्टार्ट का मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड. इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स. इट्स वेलोसिटी बिकम्स के बाद वाली जो वेलोसिटी है, इट्स मीन दे आर सेइंग दैट इट इज फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. In 8 seconds time is 8 seconds. Find out its acceleration. आपने अच्छा वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन की थी रजिस्टर पे एक्सेलरेशन की, आपने नोट डाउन की है वो? अभी जो मैंने एक्सेलरेशन की एक्सप्लेनेशन की थी, रिटर्न एक्सप्लेनेशन की थी, उसको ना, ये जो मैं रिटर्न करवाती हूँ ना काम, बुक के साइड पे ही टॉपिक के साथ साइड पे थोड़ा बहुत नोट कर लिया करें, पेंसिल से नोट डाउन कर लिया करें. इससे बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन याद रहती है कि हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था. ठीक है. नाउ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फाइनल वाज 20 माइनस इनिशियल वाज 0 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, इट विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पॉजिटिव आंसर आया है तो आप इसको कहेंगे इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट्स द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी मैं आपको वो दिखाती है कि इट इज डिवाइडेड बाय टाइम. अब जहां पर भी नेक्स्ट आपके पास रेट ऑफ चेंज आएगा ना, आपने उसको डिवाइड बाय टाइम करना है. चेंज का मतलब है डिफरेंस. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, आप बुक पे साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें. ठीक है. इसको साइड पे बुक पे कहीं भी